Assalamu alaikum. Welcome back to the Sterling Learning, where education gets meaning. My name is Zubair Rasheed. I'm an electrical telecom engineer, and today I'm gonna teach you about the numerical problems of chapter number 14 of physics, Matric 10th. Let's start our chapter. I have written formulas first. As always, before starting the chapter, we will study the basics and formulas. Electric current is calculated by current I Q over T, where Q is the charge and T is the time. So charge per unit time, like in how many seconds how many coulombs of charge pass, is the value of current, and its unit is amperes. EMF is electromotive force. Its energy over charge, W over Q. We have studied this in previous chapter as V is equal to W over Q. EMF is basically the second name of voltage. When it is stored in a battery or any other charge storing device, it is called EMF, but when it is connected inside a circuit, it is called voltage. So EMF and voltage are interchangeable names. EMF is the superior property, and the voltage, when it comes down to a circuit, it is called voltage. So then Ohm's law is V is equal to IR, where V is the voltage, I is the current, and R is the resistance. Now we will study about the factors which affect the value of resistance. These are length and area. R is directly proportional to length, as it means that if length increases, the resistance of that material also increases, and is inversely proportional to area, which means if area is increased or the wire is thickened, wire becomes thick, then the resistance gets low. And when the proportionality is changed into equality, there is a proportionality constant, which is a resistivity constant of material, and it is different for each type of material. Area of wire is pi d square by 4, where d is the diameter of wire. C is combination of resistors. When resistors are connected in series, R1, R2, R3, and voltage, as we know, as we studied in last chapter, that when a voltage is connected across multiple appliances or the things which use the energy, they are connected in series, the voltage drops. Voltage is dropped across this, and across this, depending upon the value of resistance. So total voltage sum is V is equal to V1 plus V2 plus V3, and we know V is equal to, from Ohm's law, V is equal to IR. So V1 is equal to IR1, V2 is IR2, and V3 is IR3. In series, the same current flows in all resistors, as there is only one closed path, so I is same. We will take the I as common, and V over I, this I goes there here, and V over I, and V over I is R. So R equivalent is R1 plus R2 plus R3. So simple sum of all those three resistors would be equal to the resistance of equivalent resistance of this circuit. For resistors connected in parallel, R1, R2, and R3, the voltage in parallel, there is voltage V is seen across all the resistors. There is no voltage difference. All the resistors would see this voltage across this V, this across this V, across this V, but the current differs because there are three paths, and current is dependent upon path, and the resistance in between, the resistance of the path is calculates the value of I. It is same. Current I and the resistance relationship can be seen by the if you can do a little experiment yourself. Take three little pipes and pinch little bit, one pipe from in between, and one pipe totally open, and third pipe more pinched, and supply the water from one side and see
which pipe is giving you the maximum output of water. You will understand that to give the supply of all those three uh, pipes same time, and you will see that which is completely open, not pinched, will give you the maximum water outside. So this is also true for this current thing. And so I1 plus I2 plus I3 total current is equal to I is equal to V is equal to IR. So I is equal to V over R, V over R2, V over R3. V is the same voltage as in parallel, V is same, so we will take V as common, and I over V 1 over R2 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. so अच्छा, कभी कभी मैं थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल जाता हूँ, तो जो उर्दू वाले हैं वो बेचारे देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन चलो उर्दू में बता देता हूँ उनको कि यहाँ से आगे शुरू करते हैं। आई ओवर वी है 1 ओवर आर, और वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई ओवर वी होगा 1 ओवर आर। तो आर 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। तो पावर क्या है जी हमारे पास? पावर है वोल्टेज और करंट। जितना वोल्टेज क्रॉस में दिया होगा और जितना करंट उस चीज़ में से गुजर रहा होगा उतने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। करंट क्योंकि होता है Q बाई टी, तो हम Q बाई टी इंटू वी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे V की वैल्यू V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्केयर बन जाएगा और साथ आर आ जाएगा। तो ये इसके थ्री फॉर्म्स हैं पावर के फार्मूले की। क्योंकि हमें अगर पावर दी गई है, रेजिस्टेंस दी गई है, तो हमने करंट फाइंड करना, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर दी गई है, करंट दिया गया है, तो वोल्टेज फाइंड करना, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर दी गई है, वोल्टेज दिया गया है, टाइम दिया गया, तो चार्ज फाइंड करना, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये तीनों फार्मूले ही यूजेबल हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। Current of 3 milliampere is flowing through a wire in 1 minute. For 1 minute, what is the charge flowing through the wire? 14.1 है हमारे पास। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह से सॉल्व हो जाएंगे। करंट है हमारे पास 3 मिली एम्पेयर विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर, और टाइम है हमारे पास 1 मिनट। Minute is not an international unit, we will take it into seconds, 60 seconds. Second is the international unit of time. ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, इस वजह से हमने मिनट को सेकंड्स में ले गए 60 सेकंड। तो हमने क्या फाइंड करना है? Q। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एक फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज ओवर टाइम पे डिवाइड कर तो हमारे पास करंट आ जाता है। तो हमने चार्ज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, तो करंट ज़रबे टाइम। तो क्या हमारे पास आएगा? करंट की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 60। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 180, 180 ज़रब 10 की पावर मनफी 3। तो ये हमारे पास Q आ गया, और 180 ज़रब 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये मेरे पास आंसर आ गया। 14.2 करते हैं। हर न्यूमेरिकल के अंदर मैं हर चीज़ के बारे में डिटेल्स इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि साथ में बोल भी रहा हूँ, और मैंने स्टार्ट में जो नोट्स के स्टार्ट में जो फार्मूलाज़ को रिवाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि आपको हर दफ़ा न्यूमेरिक फार्मूलाज़ की डिटेल ज़्यादा बतानी ना पड़े, टाइम की बचत हो। एट 10,000 ओम रेजिस्टेंस उसने दी हुई है हमें 100,000, 1,00,000 ओम। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी। हमने करंट फाइंड करना है। अगर हम जो 12 वोल्ट बैटरी है उसको हम हाथ लगा देते हैं इतने रेजिस्टेंस पे, तो हमारे अंदर जो करंट है वो फाइंड करना है। और अगर हमारा जिस्म गीला हो जाता है, वो ये है ड्राई स्किन के लिए, ये है वेट स्किन के लिए। तो ये R W कह लो, इसे RS कह लो।
इसमें आपके पास 1000 ओम रह जाती है, तो इसमें आर आई एस कह लो और इसको आई डब्ल्यू कह लो, हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो क्योंकि हमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, तीसरी फाइंड करनी है, तो V इज इक्वल टू आई आर, वही फार्मूला लगेगा। अब हमने V तो हमारे पास 12 है, आई एस फाइंड करनी है, आर एस है, आई एस इज इक्वल टू 12/100,000। इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.12 मिली एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद ये तो ड्राई स्किन के लिए था। अब हमारे पास जब वेट स्किन हो जाएगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और करंट की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगी, कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज सेम है। अगर I कम होगा तो R बढ़ेगा, R कम होगा तो I बढ़ेगा, उनका प्रोडक्ट V सेम रहेगा। तो आर डब्ल्यू की वैल्यू हमें है, V की वैल्यू 12 ही है, RW की वैल्यू 1000 है, और IW जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 12 मिली एम्पेयर। पिछली थी 0.12 मिली एम्पेयर और ये है 12 मिली एम्पेयर, उससे 100 गुना बढ़ गई है। 14.3 resistance of conductor wire is 10 mega ohm if a potential difference of 100 volts is applied across its ends. Find the value of current। I फाइंड करना है हमने, वही फॉर्मूला लगा, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू हमारे पास 100 है, R की वैल्यू 10 इंटू 10⁻6 है, तो हमारे पास आ जाएगा हमने इसको फाइंड करना है करंट इन मिली एम्पेयर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1010 से गया 10⁻⁻5 आ जाएगी। 10⁻⁻5 को मैंने मिली में लेके जाना है, तो 1 इंटू 10⁻⁻5 है, तो क्या करूँगा, पॉइंट इस तरफ मूव करूँगा तो 0.01 इंटू 10⁻³ हो जाएगा एम्पेयर, तो हो जाएगा मेरे पास 0.01 मिली एम्पेयर। ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। 14.4 है हमारे पास। By applying a potential difference of 12 volt across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, करंट जो है हमारे पास 1.5 एम्पेयर है, और कितने टाइम के लिए गुजर रहा है, T is what, 2 minutes, which is 2 into 60 seconds, जो कि 120 सेकेंड्स बनता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स में। तो अब हमने फाइंड क्या करना है इसके लिए, एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पावर फाइंड करेंगे, कि हमारे पास वोल्टेज भी है करंट भी है, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, करंट है हमारे पास 1.5 एम्पेयर,
तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 15 वाट। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी ओवर टाइम। पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? ई पावर इनटू टाइम। टाइम हमारे पास है 120 सेकेंड्स। तो पावर है 15 इंटू 120 सेकेंड्स। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1800 जूल। फोर्टीन पॉइंट फाइव। इसमें हम रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, सीरीज में और पैरेलल में। और ठीक है, 2 रेजिस्टर्स है। R1 है हमारे पास 2 किलो ओहम की, R2 है हमारे पास 8 किलो ओहम की। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों कनेक्टेड में सीरीज में कनेक्ट किए गए। फॉर 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कह रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास जो उसके साइड पे लगी हुई है। तो हमने इसकी ये वाली नीचे जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है हमने वो फाइंड करनी है। कौन सी है? ए वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा और साथ साथ ही उसके ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करके आंसर भी लिखता जाऊंगा। फिर पहले इसका आंसर लिखेंगे फिर अगली वैल्यू का। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज में आपने पीछे भी स्टार्ट में हमने चीज़ बताई है कि किस तरह इसका निकलेगा। सीरीज में जब इसको टोटल सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है कि हम सीरीज में रजिस्टर्स को सिंपल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकल आती है। तो आर इक्विवेलेंट होगी हमारे पास 2 किलो ओहम प्लस 8 किलो ओहम, 10 किलो ओहम हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकल आएगी। उसके बाद सेकंड चीज़ जो उसने रिक्वायर की है, हमसे पूछी है, वो है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है सेम करंट will flow in each resistor. So I is equal to V over R equivalent. टेन ओवर टेन के 10 cancel out 1, 10 volts over 10 kilo ohm, 1 मिली एम्पेयर। सो करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 मिली एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच। सीरीज में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिवाइड्स सो हम क्या करेंगे, किस तरह निकलेगा पोटेंशियल? V1 इज इक्वल टू आई आर वन। फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर है। आई हमारे पास सेम है। R1 रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 1 मिली एम्पेयर इंटू 2 किलो ओहम
इन दोनों को ज़रब देंगे तो 2 वोल्ट्स आ जाएगा हमारे पास, मिली किलो को कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। V1 V2 हमारे पास होगा IR2, I is 1 milliampere into 8 kilo ohm, so it will be 8 volt V2। और हम फॉर सीरीज हमें पता है V is equal to V1 plus V2 which is equal to true। सो हमारी जो वैल्यूज जो हैं V1 की और V2 की, ये दोनों ठीक हैं। हम करेंगे अब 14.6 नोट्स फिज़िक्स, और ये जो चीज़ें थी ये अब मेरी नहीं लिखी गई इसमें, ये मैं लेक्चर कंप्लीट करके उसके बाद इसको लिख लूँगा। इसमें 2 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। दूसरे सवाल में 6 किलो ओम का एक है, R1 लिख लेते हैं। इसमें 2 रजिस्टर्स हमारे पास, R1 6 किलो ओम का, R2 हम लिख लेते हैं, है हमारे पास 12 किलो ओम का। पिछले में हमने सीरीज की बात की थी, इसमें है पैरेलल कनेक्टेड। वोल्टेज जो है हमारे पास, बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है। वही वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट R, so for parallel we know 1 over RE equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2, 1 over 6 plus 1 over 12, 12 and 2 plus 1, 1 over R equivalent, so R equivalent becomes 12 by 3, which is 3 4s are 12, so 4 kilo ohm. R equivalent is 4 kilo ohm. Now 14 points, sorry, it has 3 parts as in our previous numerical. So B part is current in each resistor. So we know it's parallel connected, so current will differ in each of these. First we need to find the I total current जो है, sorry no, we don't need to find total current, we can find directly the current values because we know the V. So I1 would be V over R1 and I2 would be V over R2. And it comes as 1 milliampere and 0.5 milliampere. So for third and last part C, same thing it is asking as it was asking in last chapter, last numerical, potential difference across each of the resistance. क्या पूछ रहा है जी? पोटेंशियल difference as we know
For parallel, each of the appliances or component has same potential difference. So V1 is equal to V2 is equal to V is equal to 6 volts. 14.7. An electric bulb marked with 212 volt इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके जो वर्किंग वोल्टेजेस हैं वो 220 वोल्ट्स हैं। 100 वाट पावर उसकी 100 वाट है। आर हमने फाइंड करना है। टाइम ऑफ यूज है 5 आवर्स। पर डे डेली है तो पर डे लिख देंगे इसको। तो एनर्जी, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर 1 month। and 30 days। पावर दी गई है, वोल्टेज दी गई है, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर के अंदर करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमारे पास आ जाएगा P इज 100, V is 220 into I would remain this on this side, 100 over 220 is equal to 0.4545 amperes. So we need to find the resistance. So V is equal to IR, R is equal to V over I. V is what, 220 over 0.4545 is equal to 484 ohms. So resistance comes out to be as 484 ohms. Incandescent bulb has operating resistance हमें दी गई है बल्ब की 95 ओहम। पावर इसकी दी गई है 150 वाट। तो वो कह रहा है V जो उसको वोल्टेज बना के लिए बना गया 120 वोल्ट और 220 वोल्ट सर्किट। इज इट डिजाइंड फॉर, मतलब इसको डिज़ाइन किया गया 120 के लिए या 220 के लिए। तो इसका भी सिंपल वही चीज़ हम यूज़ करेंगे। पावर क्या होती है, वी आई की जगह पे V ओवर आर लगता है, V इंटू वी ओवर आर। सो
it becomes V square over R. We need to find V, so we will put the values of power 150, V square over R 95, V square 95 into 150 equal to some value. So V square under root equal to 14 to 50 अंडर रूट. सो V हमारे पास आ जाएगा 119.83, which is approximately equivalent to 120 volts. So it is designed for 120 volts. इसके बाद हमारे पास है 14.9. A house is installed with 12 bulbs 60 watt each, 10 bulbs 60 watt each, 5 hours daily use. One. The second is 4 fans 75 watts each, 10 hours daily use. 3 is 1 TV 100 watts 5 hours daily use. Fourth is iron 1000 watt 2 hours daily use. If the cost of 1 unit of electricity is rupees 4, 1 unit cost is equal to rupees 4. 1 month एक्सपेंस बताना है आपने. पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट किसे कहते हैं. 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो पहले हम किलोवाट आवर निकालेंगे, बल्ब्स के लिए निकालेंगे. बल्ब्स क्या होगा, 10 बल्ब्स हैं ज़रब 60 वाट ईच है, ज़रब 5 आवर्स डेली यूज़ है, तो आपके पास आ जाएगा 3000 watts is equal to 3 kilowatt hour डेली यूज़. इस तरह आपके पास फैंस आ जाएंगे 4 into 75 into 10, it also becomes 3000 watts.
which is equal to 3 kilowatt hour डेली। उसके बाद आपके पास टीवी आ जाएगा 1 into 100 into 5 which is 500 watt which is 0.5 kilowatt डेली। उसके बाद आपके पास आयरन आ गया है 1 into 1000 into 2 hours daily 2000 watts which is equal to 2 kilowatt hour daily. So these are the daily uses of all appliances. So sum them all 8.5 kilowatt hour daily use all appliances. One month use 8.5 into 30 which becomes as 255 kilowatt hour. So one unit is equal to 1 kilowatt hour. So we have how many units? 255 kilowatt hour into 4 rupees. So cost आ जाएगी आपके पास 4 rupees per kilowatt hour. आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1020 rupees. 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. बल्ब क्या है हमारे पास 100 watt है। वाटर हीटर क्या है 4 किलोवाट। सप्लाई कितनी है हमारे पास सप्लाई है हमारे पास 250 वोल्ट्स। हमने क्या क्या फाइंड करना है करंट आई इन ईच और क्या साथ करना है रेजिस्टेंस ऑफ ईच। बल्ब 100 वाट है तो हम क्या करेंगे पी बल्ब लिख लेंगे और पी एच लिख लेंगे पावर। पी बी लिखा इक्वल टू voltage into current. Voltage is 250 and current is IB and into IB power is 100 so IB current in bulb is equal to 100 over 250 which comes out to be as 0.4 amperes. And same way IH would be obtained by 4 kilowatt over 250 which comes out to be as 16 ampere. And now we have to find the resistance.
resistance of bulb equal to RB V over IB 250 over 0.4 which is equal to 625 ohm. Resistance in heater is equal to 250 over 16, which comes out to be as 15.62 ohm R in heater. I resist 14.11, the last one of this chapter, and after that this chapter is ending. So good. Okay. Resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt. By means of a wire of negligible resistance, a current of 5 ampere passes through the resistor. Calculate the power dissipated in resistor, total power produced by battery. Give the reason of the difference between these two quantities. R is 5.6 ohm, V is 3 volts, I है हमारे पास 0.5 एम्पेयर, power dissipated in R, we have the formula of P is equal to I square R, so we will use this formula. Resistance is, current is 0.5 square and 5.6 multiplied by, so power comes out to be as 1.4 watt, while the power supplied by voltage V is power P is equal to VI. V is 3 volts into 0.5 is equal to 1.5 watt. There is difference because some power is dissipated in battery as well. कुछ पावर बैटरी के अंदर भी हमारी यूज हो जाती है PR। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।